सुधहार अपरिवर्तित रखिले आरबीआई लगातार एकादश थर पर सुधहार 6.5% अपरिवर्तित रखा जायछि। कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर 10.5% ह्रास करा जायछि। जीडीपी 2 वर्ष रे सर्वनिम्न स्तर रे पहुंची जाइथिबा बेले 2024-25 आर्थिक वर्षर अभिवृद्धि हार रे मध्य परिवर्तन आनिछंती देशर सर्वोच्च बैंक। अभिवृद्धि हार पूर्वरु 7.2% आकलन करा जायथिला, जहां एबे 6.6% को खसाई दिया जायछि। पुणी बड़ निष्पत्ति नेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुणी अपरिवर्तित रहिला रेपो रेट बा सुध हार। लगातार एकादश थर पर सुधहार 6.5% अपरिवर्तित रही। आरबीआई आर्थिक नीति संपन्न कमिटी बैठक में 4-2 होई निष्पत्ति। मुद्रास्फीति उच्चा थिबा बेले आरबीआई सुधहार अपरिवर्तित निष्पत्ति लोकों होई बड़ आश्वस्ति। अर्थात ऋणर किस्ती प्रदान लोकों समान रही, सेमानंकु अधिक सुध देबाकू पड़िबो नहीं। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. आर्थिक अभिवृद्धि हार कम थिबा बेले आरबीआई नैछंती बड़ पदक्षेप बड़ रिस्क। 2 वर्ष रे सर्वनिम्न स्तर रे पहुंची जीडीपी जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर रे होइछि 5.4%। पूर्वरु यह 7% हेबो बोली आरबीआई आकलन करथिले, किंतु ताहा संभव होइपा नाही। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे देशर सामग्रिक जीडीपी 7.2% हेबो बोली पूर्वरु आकलन करथिले आरबीआई, किंतु एबे जीडीपी को देखि पूर्व आकलन रे आनिछंती परिवर्तन। 7.2% बदल में अभिवृद्धि हार 6.6% हेबो बोली नुआ प्रोजेक्शन करछंती आरबीआई। Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year. कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर उपरे मध्य बड़ निष्पत्ति नैछंती आरबीआई रो आर्थिक नीति संपन्न कमिटी। सीआरआर 25 बेसिस पॉइंट बा 0.5% कमाई दैछंती, जहा बैंकिंग व्यवस्था रे लिक्विडिटी बा चलत टंका को दैछि बड़ प्रोत्साहन। पाखापाखि 1.16 लाख कोटी बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करिबो, जहा ग्राहकों को ऋण प्रदान हेबो सहायक। भारतीय मुद्रा तुलन में डॉलर रो मूल्य बढ़ुवा कारणरू सीआरआर उपरे कटकणा लगाइथिले आरबीआई। सीआरआर हेउछि बैंक गुड़िक आरबीआई रे जो टंका गच्छित रखिथांती। मुद्रास्फीति नियंत्रण करबा सह ऋण प्रदान रे नियंत्रण पई सीआरआर को एक टूल भाबे व्यवहार करथांती आरबीआई। Now, even as liquidity in the banking system remains adequate, system liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL, and this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. पूर्व आकलन होता 4.5% मुद्रास्फीति 4.8 कर।
आसंता क्वार्टर रे खाद्य मुद्रास्फीति कम हेबो बोली आशा रखिछंती आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। Inflation, on the other hand, surged above the upper tolerance band of 6% in October, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March. And we expect that this is the trend and it will be backed by seasonal correction in vegetables prices, Kharif harvest arrivals, likely good Rabi output and adequate cereal buffer stocks. आसंता 10 तारिख रे सरुछि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दासଙ୍କ कार्यकाल। भारतीय प्रशासनिक सेवारु 2018 डिसेम्बर 12 तारिख रे अवसर नेबा परे सरकार तांकु आरबीआई गवर्नर भाबे नियुक्ति देथिले। दुईटी संप्रसारण रे अतिरिक्त 3 वर्ष पूरा करि सारछन्ती से। तृतीय संप्रसारण ए जाय काहाकु दिया जाय किंतु सरकार ए जाय तांको कार्ड खोली नाहंती। एभली स्थिति रे आरबीआई आर्थिक नीति संपन्न कमिटीर निष्पत्ति गवर्नर शक्तिकांत दासଙ୍କ शेष बैठक ना तांकु आउ एक्सटेंशन मिलिबो ताहा खूब शीघ्र स्पष्ट हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।